ओके दोस्तों, अब हम लोग एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, अल्कोहल, ईथर, फेनॉल। ये वाले चैप्टर में 5 पार्ट्स है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स, ईथर, इपॉक्सी एंड फेनॉल। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स क्या होता है? वो सारे कंपाउंड्स जिसमें केवल और केवल एक हमारा OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। डिपेंडिंग अपॉन जो वो कार्बन है जिसके साथ OH जुड़ा हुआ है उसका डिग्री क्या है। तो अल्कोहल फंडामेंटली 3 टाइप के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। इसके अलावा मिथाइल अल्कोहल जो है उसको हम लोग 0 डिग्री अल्कोहल बोल सकते हैं, क्योंकि केवल और केवल एक ही कार्बन एटम है। अदरवाइज अगर 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको हम 1 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे, ये वाले को हम 2 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे, इस वाले पे जो कार्बन है उसका डिग्री 3 है तो इसको हम 3 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो फॉर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहला, alcohols are liquids having specific smell and are colorless. नॉर्मली अल्कोहल्स जो है वो लिक्विड्स होते हैं, वो स्पेसिफिक स्मेल एंड दे आर कलरलेस। अप टू C12 अल्कोहल्स आर लिक्विड्स मोर नंबर्ड अल्कोहल्स are solids. More numbered alcohols are solids. दूसरा, lower alcohols are fairly soluble in water lower alcohols are fairly soluble in water due to H bonding। क्या इस पर हमारे पास ROH है और ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो ये वाले हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस है, ये वाले ऑक्सीजन पर डेल्टा माइनस है। तो लोअर अल्कोहल्स आर फेयरली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू H बॉन्डिंग। ठीक है, नाउ क्या है? ड्यू टू alkyl parts alcohols are soluble in organic solvents also. Due to the alkyl parts, alcohols are soluble in organic solvents also. ठीक है, राइट। अच्छा, solubility in water decreases with the increase in molecular weight। Solubility in water decreases with the increase in molecular weight, जो कि लॉजिकल है। जितना मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट ज्यादा बढ़ जाएगा, तो वाटर में सॉल्युबिलिटी जो है
वो हमारा धीरे धीरे डिक्रीज करता रहेगा। एंड बेसिकली अगर हम देखें, अगर एकदम हल्का वाला देखें, CH3OH and C2H5OH are soluble in water in all proportions. They are soluble in water in all proportions. ठीक है? Okay. Now, third. Boiling point and melting point of alcohols boiling point and melting point of alcohols are proportional to the molecular weight. Boiling point and melting point of alcohols are proportional to the molecular weight. मतलब as a molecular weight increases, boiling point and melting point also increases. जो कि लॉजिकल है, उतना मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो उनके बीच का इंटरेक्शन बढ़ेगा, तो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी डेफिनेटली हमारा इंक्रीज करना चाहिए था, जो कि साफ साफ तौर पे हमारा करता भी है। इसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग। ब्रांचिंग जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हमारा डिक्रीज करता रहेगा। सो अगर मैं देखूं CH3 CH2 CH2OH जो हमारे पास है N प्रोपानॉल, उसका मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेटली ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आइसोप्रोपानॉल। इन प्रोपानॉल जो है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आइसोप्रोपानॉल। अच्छा, नेक्स्ट, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, alcohols are viscous in nature. Due to intermolecular H bonding, alcohols are viscous in nature. ठीक है? More the number of OH group per molecule more is the viscosity। तो अगर मैं विस्कोसिटी के बारे में देखूं, मैनिटॉल या फिर चलो ना ग्लिसरॉल
जिसमें 3 OH ग्रुप होता है इज ग्रेटर देन ग्लाइकॉल इज ग्रेटर देन इथाइल अल्कोहल। ओके, नेक्स्ट अप क्या है? दी बॉइलिंग पॉइंट and a melting point of alcohols are greater than corresponding ethers are greater than the corresponding ethers due to the intermolecular H bonding, but lesser than the corresponding carboxylic acids. The boiling and melting point of alcohols are greater than the corresponding ethers, but lesser than the corresponding carboxylic acids. Next up, alcohols, except methyl alcohol, sorry, methyl बोल दिया, ethyl alcohol, all other alcohols are poisonous in nature. Except ethyl alcohol, all other alcohols are poisonous in nature. जो हमारा मिथाइल अल्कोहल है CH3OH, that causes blindness, and कोलेस्ट्रॉल जो है that is called notorious alcohol that creates heart problem. अच्छा, इसके अलावा प्रोपानॉल is called rubbing alcohol. So दोस्तों, ये सारे के सारे physical properties है of monohydric alcohol. Now we move on to the chemical reactions. Let's see.